जय भीम भैया, मनोज भैया, स्वागत है आपका। जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हो आप? स्वागत है मनोज भैया। जय भीम, कैसे हो आप? जय भीम, नमो बुद्धाय। गोविंद भैया, मोस्ट वेलकम है आपका हमारे लाइव में। कैसे हो आप? आप कहाँ के हो? मैं यूपी से हूँ भैया। आप कहाँ से हो? हम गुजरात से हैं। ओके भैया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बताने के लिए। और बताओ, फैमिली में सब लोग कैसे हैं? जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय भैया। जापानी नाश्ता? जापानी नाश्ता तो हमने देखा नहीं है भैया, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं ना। तीन आपकी लाइक हो गई है? जी हाँ भैया, हो गई है।
Biar masuk dong.
जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बाबा साहब अमर रहे। थैंक यू सो मच भैया, सेम टू यू। स्वागत है आपका हमारे लाइव में। कैसे हो राजकुमार भैया? लाइक भी किया जाता है? पता नहीं भैया। थैंक यू सो मच। सामने बैठकर लाइट जलाएं जी। इतनी टाइम नहीं होती है, इतनी टाइम नहीं होती है राजकुमार भैया जी। बहुत सारे काम होते हैं।
इस बार सामने से जय भीम बोलिए जी। सामने क्या होता है भैया? छोटे लिए थोड़ी है ना, सामने ही है। बोलो, सुन रहे हैं आपकी बात से। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम भैया, परवीन भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय। लाइक कर दिया, थैंक यू भैया। बताएं कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। परिवार में सब कैसे हैं? सब ठीक हैं भैया। चाय नाश्ता हुआ कि नहीं? अभी बन रहा भैया। आप बताइए, आपके परिवार में सब लोग कैसे हैं भैया? जय भीम, नमो बुद्धाय बड़े भैया जी, थैंक यू सो मच। सब ठीक है, ओके भैया, थैंक यू। ठीक ही रहना चाहिए।
जय भीम परवीन भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कौन है? कौशलपुर। आप खाना बना रही हो? जी हाँ भैया, मैं खाना बना रही हूँ। थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच परवीन भैया, थैंक यू। आराम से रखना मैडम, फिर आकाश रेडी हो जा, पानी गर्म करके रख दिया। ये तो जाएंगे नहीं, पता है ना? हाँ? क्या चीज? क्या चीज? इसीलिए करो, फास्ट तैयार जाओ, अकेले जाना है ना, जल्दी करो। पहले फैजान की मम्मी से बात तो कर लो। मैं कर लूंगी, नहीं करेंगे मैं छोड़ दूंगी, बस उसमें क्या जाओ, मैं छोड़ दूंगी, चाचा छोड़ देंगे, कोई छोड़ देगा। अरे उसी के साथ जाना, कुछ बात। थैंक यू बड़े भैया, थैंक यू सो मच।
थैंक यू बड़े भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम भैया, जय भीम। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय भैया। बाय भैया, बड़े भैया जी, बाय बाय। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
बाय 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 बाय।
जय भीम नमो बुद्धाय भाई, थैंक यू सो मच। स्वागत है आपका भारती भाई। इधर तो ऑनलाइन क्लास चल रही है इसलिए बोल नहीं पा रही हूँ भाई। कैसे हो आप? खाना पीना हुआ कुछ? हमसे ना पूछिए खाना। खाना पीना हुआ भारती भाई? बताओ। क्रांतकारी जय भीम नमो बुद्धाय भारती भाई, थैंक यू सो मच। कैसे हो आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। आप बताओ आप कैसे हो? बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही है ना, तभी बोल नहीं पा रही हूँ। आपका खाना पीना हो गया है? नहीं भाई, अभी खाना पीना नहीं हुआ है। लड़का गया स्कूल, इन दोनों की ऑनलाइन क्लास चल रही है।
आपका हुआ? आप बताओ। हमसे मत क्यों पूछा? तुमसे क्या पूछे यार, बताओ। अभी नहीं बन रहा है क्या भाई? अभी बन रहा है खाना?
अब मैं आपसे विशेष बात नहीं करूंगा और नहीं जानूंगा। मेरा खाना बन गया है, अभी मैं सामान के लिए दुकान जा रहा हूँ। आप जितना देर तक बोलेंगी मैं उतना देर तक लाइव में जुड़ा रहूंगा। बोलो भारती भाई, बोलो, मैं सुन रही हूँ। क्या नहीं जानना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो बताओ। अब मैं खुद ही लाइव नहीं चलाऊंगी भाई। बोलो भारती भाई, कहाँ चले गए। मैं किचन में आ गई। बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही है ना, इसलिए थोड़ी सी मुश्किल हो रहा बोलने में आज। कहाँ गए। बोलो भाई, कहाँ गए। ये कौन सी दवाई है। ये झंडू पचारी।
बोलो भाई बोलो, रोटी बना रही हूँ। अब तक मैं चिल्ला रही थी आपको। जय भीम भाई, जय भीम, नमो बुद्धाय। बोलो भारती भाई। भाई बोलो, रोटी बना रही थी। हस्बैंड आए ना ड्यूटी से, फिर उनके लिए रोटी बना रही थी। बोलो, मैं सुन रही हूँ। क्या बोलूं मैं? अब तक कुछ लिख रहे थे आप। क्या लिख रहे थे? मैं कैमरा ही ऑफ कर दूं पहले। अब मैं आपसे विशेष बात नहीं करूंगा, नहीं जानूंगा। क्या विशेष बात थी भारती भाई, बताओ। क्या विशेष बात है भारती भाई, बताओ मुझे प्लीज। बताने का कष्ट करो। मुझे कुछ समझ में आएगा तब ना बोलूंगा। क्या चीज समझ में नहीं आया भाई? भारती भाई, क्या चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है दीदी। मैं अभी काम कर रही हूँ, बच्चों का चल रहा है ऑनलाइन क्लास। मैं विस्तार से आपको बता दूंगी भाई, विस्तार से पूरे। मैं ना इसके बारे में पूरे विस्तार से आपको बता दूंगी। बस मैं अब लाइव से जुड़ा रहूंगा। ऐसी बात नहीं है भारती भाई, मैं अब लाइव चलाऊंगी नहीं। बस आप लोगों भाइयों की वजह से मैं चला ली ना। अब मैं नहीं चलाऊंगी, क्योंकि मुझे जो होते हैं ना, मैं सोचती हूँ चलो जाने दो, मैं कुछ पूछूंगा ही नहीं। ऐसी बात नहीं है भाई भारती भाई। मैं सोचती हूँ ना कि इंसान हमेशा दुश्मनों से लड़ता है, कभी अपनों से नहीं। जैसा आपकी मर्जी वैसा कीजिए दीदी। बिल्कुल भाई। क्या हुआ? मैं तो सिर्फ बोल सकता हूँ। क्या बोल सकते हो बताओ ना। क्या बोल सकते हो भारती भाई, बताओ मुझे। करना आपको है। बोल क्या सकते हो बोलो। मुझे करना है तो मुझे भी पता है। जो कुछ फैसला लेना मुझे ही लेना है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल राइट भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपकी बात बिल्कुल सही है, 100% सही है। करना मुझको ही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर अपने भाइयों की जगह कोई दूसरा होता ना, तो सच में शायद मैं ऐसे चुप नहीं बैठती। बस अपनों से थोड़ी सी मजबूर हो जाते हैं, जाने दो, अपने भाई हैं।
मुझसे कुछ गलती हुई है क्या भारती भाई, बताना कल। बोलो। बोलो, मुझसे कोई गलती हुई है? मुझे कल के बारे में नहीं मालूम है दीदी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सोनू भैया, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। सोनू भैया, नाश्ता वास्ता हुआ कुछ आपका? क्या अभी सो के उठ रहे हो? जिस दिन भारती भाई अपने ही समाज के लोगों की बात आप जान जाओगे ना अच्छे से, शायद आपको घृणा होने लगेगी उस दिन अपने ही भाइयों से। शायद वो चीज आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि हमारे समाज के हमारे भाई लोग ऐसे हो सकते हैं क्या। समझे? फेस से सामने से देखने में कुछ और दिखते हैं, पर पर्दे के पीछे क्या होते हैं ना, समझना मुश्किल हो रहा है। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। सोनू भैया, आप कैसे हैं सोनू भैया? जय भीम भारती भाई। घुमा फिरा कर बात नहीं बोलो दीदी, जो भी बोलना है डायरेक्ट बोलो। घुमाती फिराती नहीं हूँ भाई, अभी उठ रहा हूँ सो के। अच्छा, घुमा फिरा के बात करने से कंफ्यूजन होता है, मैं समझती हूँ भाई, लेकिन मैं नाम भी लेना मुझे अब ना अजीब सा फील होता है। समझे? जो बात बीत जाती है ना, उसको बार बार मैं रिपीट भी नहीं करना चाहती, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं सोचती हूँ ना, जाने का। हर एक चीज लाइव में बोली भी नहीं जा सकती भारती भाई, बात यहाँ से हो जाती है बस। हर एक बात लाइव के बीच में नहीं कही जाती है। उनका क्लास खत्म हो गया?
इस चीज के बारे में बोलना ही बेकार है। मुझे लग रहा है अब के लाइफ के चक्कर छोड़ना पड़ेगा। मुझे लग रहा है आप लाइफ के क्या चीज समझी नहीं भारती भाई, जरा बताना मुझे क्या लिखे हो। भारती भाई बताना जरा। प्लीज मुझे स्पष्ट बताओ, मैं आपकी बात को समझी नहीं। बहुत ज्यादा मेरा समस्या उत्पन्न हो रहा है। अरे भारती भाई, आपकी समस्या कुछ नहीं है, इसमें समस्या किसी और की है। मैं कैसे बताऊं, सोनू भैया से मैं पूछूंगी आपसे कांटेक्ट कैसे हो पाएगा मेरा, फिर मैं आपसे बात करूंगी। इसमें आपकी बात नहीं है भारती भाई। लाइफ के चक्कर में ये गलत बात है आपकी ये सोच गलत है। आप जैसे भाई ना, आप लोग 2 ही 4 ऐसे भाई हो जो अपने समाज के हो। सभी बहनों का ना मतलब कैसे बताऊं कि आप लोग कैसे उसको संभालते हो, कैसे देखते हो। पर मैं अब लाइफ ही छोड़ दूंगा दीदी। और तो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, लाइफ क्यों छोड़ दोगे क्या बात है, लेकिन इसमें आपके कोई रोल नहीं है, इसमें रोल किसी और का है। भारती भाई सच्ची, इसमें रोल किसी और का है। इसमें गेम साजिश बहुत बड़ी हो सकती है भाई। मैं नहीं चाहती कि मेरी समाज की बहन बेटियां ऐसे भाइयों का शिकार बन के रह जाएं। मैं क्या बताऊं। रोल किसी का भी हो, पर समस्या तो सभी के साथ आ जाता है। वो मैं समझती हूँ भाई, समस्या आती है, बट ऐसी चीजें नहीं है भारती भाई, समझे। मुझे समस्या नहीं हुई थी, मुझे कल नहीं देखा था। सोनू भैया हो क्या लाइव में कमेंट करना। आपको बोलते बोलते थक गया, ये सब चक्कर में नहीं रहो। अरे मेरे भाई कैसे बताऊं, कैसे बताऊं मेरे भाई, आपको कैसे बताऊं। मुझे सब कुछ है, मैं किसी की गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। इसमें बात बहुत लंबी चौड़ी है भाई, मेरी ही नहीं। सोनू भैया कहाँ हो, कुछ मत बताओ दीदी। सोनू भाई अगर लाइव में हो तो कमेंट करो प्लीज। मेरा दिमाग कल खराब हो गया था, खराब नहीं, जिस दिन सुन लोगे ना हकीकत उस दिन और खराब होगा आपका दिमाग। उस दिन और आपका दिमाग खराब होगा। मैं दोबारा लाइव को देखा भी था, फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। एक बात बताती हूँ भारती भाई,
जब मैं पहले लाइव आती थी, सुनो मेरी बात को ध्यान से, जब मैं पहले लाइव आती थी, मैं नए-नए में जब मैं लाइव स्टार्ट करी, मैं लाइव आपको शायद वो मैं बताऊँगी अपने लाइव में, वो कौन-सी लाइव है, आज आके उसको आप देखना दोबारा से। मेरे समाज के 2 भाई जिनको मैं जानती हूँ, जैसे आपको जानती हूँ कि ये मेरे भारतीय भाई हैं, सोनू भैया हैं, ऐसे ही हमारे समाज के 2 भाई जो हमसे जुड़े थे। मैं उनको भाई-भाई और मुझे वो दीदी-दीदी बोलते थे। और ठीक है, दूसरे दिन क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, एक बार अपनी ओरिजिनल जिस आईडी से मैं जानती थी उस आईडी से आए, दूसरे दिन उन्होंने दूसरी आईडी से आए। दूसरी आईडी से आए तो बोले कि जय भीम बोले, पहले राधे-राधे बोले उन्होंने, राधे-राधे, तो मैंने और राधे-राधे बोल दिया और नहीं समझा तो सोनू भैया के पास कॉल किया तो कॉल बहुत बार इग्नोर कर रहे थे, तो आप ही बताओ कि मैं कैसे जानती? तो सुनो तो मेरी बात। मैंने इसके बाद उन्होंने क्या किया, राधे-राधे बोले, मैंने भी बोल दिया भैया राधे-राधे, कोई भी हो, इंसानियत होनी चाहिए इंसान के अंदर, हमें और किसी चीज़ से नफ़रत नहीं है। चलो ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला, एक काम करोगी, मेरी एज 22 साल है, मेरी शादी करवा दो और ऐसे शब्द बोले जो मैं उस चीज़ को यूज़ भी नहीं कर पाऊँगी। आपको लाइव शेयर बताऊँगी कौन-सी लाइव है। प्रमोद बड़े भैया जी, जय भीम, नमो बुद्धाय, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, स्वागत है आपका। फिर उसके बाद भारती भाई क्या हुआ, उन्होंने फिर मेरे से इंग्लिश में बात कमेंट करने लग गए, लाइक कर दिया, थैंक यू भैया। इंग्लिश में कमेंट करने लग गए, मैंने रिक्वेस्ट किया भैया इंग्लिश में कमेंट करने के क्या फायदा, मैं अर्थ नहीं, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अर्थ नहीं समझ पाऊंगी। जय भीम बड़े भैया जी, जय भीम। तो फिर उन्होंने बाद में क्या किया कि क्या आता है आपको, मैंने कहा मुझे नहीं आती इंग्लिश। इंग्लिश लिखो, हिंदी वाली लिखोगे तो मैं पढ़ लूंगी, समझ लूंगी, या हिंदी लिखो। उस टाइम में काम में बिजी था भाई। सोनू भैया बोल रहे हैं भारती भाई, उसके बाद उन्होंने क्या लिखा कि ऐसे शब्द लिखा, मैं जो आप भाई मानती हूँ आपको ना, वो शब्द मैं बोल नहीं सकती हूँ। फिर उसके बाद में मैंने उस चीज को तुरंत मैंने हाइड किया और मैंने फिर बोला कि तब तक आ गए अजय भैया, अजय हुड नाम से जिनका चैनल है, आपको पता ना अजय भैया को, अजय भैया आ गए। जब अजय भैया मेरे लाइव में अजय भैया की एंट्री हुई तो मेरे आंखों में आंसू, अजय भैया बोले अरे भाई क्यों बहन को परेशान कर रहे हो, कंचन दीदी को क्यों परेशान कर रहे हो आप लोग। मैंने कहा अजय भैया से, अजय भैया आप जानते हो किसकी आईडी है? अजय भैया ने बोला कि हाँ सिस्टर, हाँ बहन कंचन, ये तो मैं तो जानती हूँ, दोनों लोगों का नाम बताया भैया, अजय भैया यही लोग तो हैं। फिर मैं भारती भाई उस टाइम में इतना मुझे अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ कि मैं जिसको अपना भाई जो मुझको दीदी दीदी बोल के बात करे, वो भाई एक गलत शब्द दूसरे आर्टिस्ट से मुझको बोले, वो भाई कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद उसी दिन से मैंने ब्लॉक किया एक आईडी। फिर उन्होंने, मैं तो सुबह लाइव चलाई तो फिर उन्होंने दूसरी आईडी से आए, बोले दीदी सॉरी मुझे माफ कर देना दीदी सॉरी। मैंने कहा दीदी तो शब्द बोलो मत, क्योंकि तुम भाई कहने लायक हो नहीं, मुझे शर्म आ रही है तुमको भाई कहने में। अब मैं आज के बाद मैं मेरे लाइफ में आप आना भी मत, मुझे दीदी मत बोलना। उस दिन से मैंने उनके दोनों आईडी को हाइड किया था। फिर उन्होंने कितनी बार मेरे लाइव में आईडी चेंज करके आए मुझे पता नहीं। जो आईडी से कल आए थे, मैं उस आईडी को हाइड किया था। जब कमेंट सोनू भैया के लाइव में मेरा शो नहीं हो रहा था तो मैंने जितने हाइड थे मैंने वहां से सब अनब्लॉक कर दिया था। फिर इसके बाद में फिर ये कल मेरे लाइव में ऐसे आए, बहुत पूछने के बाद तब उन्होंने अपना नाम बताया कि हाँ मैं यही हूँ। अब बताओ अपने साथ साथ दूसरों को नाम क्यों बदनाम करे कि तुम उनको जानती हो, तो हमको जानती हो, ऐसा क्यों है भारती भाई बताओ, मुझे गुस्सा नहीं आएगा? दीदी ऐसे लोगों को पूरा इग्नोर, इसमें भाई इग्नोर नहीं लो भारती भाई, इसमें बहुत बात है, आप सोनू भैया से बात कर लेना। बात जिस दिन जान जाओगे ना, शायद अपने दांतों तले उंगली दबा के रह जाओगे। मैं नहीं, मेरी बहुत बहनें ऐसी हैं। वो परेशान हूँ, कीजिएगा जब आपके पास समय होगा तो। एक मिनट, हाथ में आटा लगा लिया, हाथ धो लो। हाँ
हाथ धो लेना। लाइट चालू हो गई? हाँ? लाइट चालू हो गई? लाइट के नाम आ रहा है, सॉरी क्लास। सॉरी बेटा सॉरी, लाइट करके नाम आ जाता बार बार। क्लास चालू हो गई, अटेंड कर लो बेटा। ठीक है सोनू भैया से बात कर लूंगा दीदी। बिल्कुल भाई बिल्कुल, आपकी सारी सच्चाई पता चल जाएगी। उसके बाद मैं डिसीजन लेने में कुछ समय लूंगा, फिर उसके बाद मैं अपना विचार रखूंगा। बिल्कुल रख सकते हो भाई। मैं देखो कभी न गलत करते हैं, किसी के साथ मुझे आदत ना, मुझे पसंद नहीं है चीज, जब चाहे जो हुआ मुझे ये चीज नहीं पसंद है भारती भाई। बिल्कुल आप ले सकते हैं, उस चीज को परख सकते हैं, समझ सकते हैं, फिर उसके बाद कुछ बोलिएगा कि नहीं ये क्या सच्चाई है। आप उस चीज को जान भी लीजिए। जय भीम नमो बुद्धाय सभी को। सीमा सिस्टर जय भीम नमो बुद्धाय, स्वागत है, पर ज्यादा फोकस मत करो अभी। मैं फोकस नहीं, लाइव में नहीं बोल सकती भाई फोकस की क्या, मैं तो पीछे नहीं हटती है सब चीजों में। बस ये होता है ना कि मैं क्या ही बताऊं। और बताओ दीदी जी कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सीमा बहन, आप बताओ आप कैसी हो? बहन क्या करूं, मजबूर हूँ आज किचन में आके बात कर रही हूँ, बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही है। और बताओ दीदी जी कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बहन, आप बताओ खाना पीना हो गया आपका? खाना नहीं हुआ अभी, अभी खाना ही बना रही हूँ। मैं भी ठीक हूँ। ओके सिस्टर, ओके थैंक यू। ठीक ही रहना चाहिए बहन। कल बहुत प्रयास किया है समझने का, पर मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। आप पूरा असलियत समझ लीजिएगा। हम भी खाना बना रहे हैं। ओके सिस्टर, ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू सीमा बहन, खाना बना लो बहन। आज मैं 11 बजे से शाम 5 बजे तक कॉलेज में रहूंगा दीदी। ओके भैया कोई बात नहीं, आप अभी से जाओ और अपनी तैयारी करो। मुझे पता आज आपका प्रैक्टिकल है स्कूल में ना। जय भीम सीमा सिस्टर, जय भीम नमो बुद्धाय, थैंक यू सो मच। हम लोगों को शाम सुबह यही काम ही रहता है, क्या करे बहन, शाम ही सुबह नहीं, बच्चे घर पे रहते हैं ना तो हमेशा दिन भर यही रहता है। और मेरा प्रैक्टिकल के थोड़ी बताना है कि कल कैसे प्रैक्टिकल किया गया था। मैं अच्छा भैया। और दोपहर में क्यों, दोपहर में अलार्म नहीं बजता है? बताओ सोनू भैया, दोपहर में अलार्म नहीं बजता है? आज सुबह से बज रहा है, 2 घंटा लगा शांत करने में। जय भीम सीमा सिस्टर, सोनू भैया जी की तरफ से। भारती भाई आप अपना तैयारी करो, अच्छे से नहाओ धो, बाहर से आता इंटरव्यू देने लेने आएगा। अच्छा भैया, बाहर से आता है इंटरव्यू लेने। दस बजने वाले हैं भारती भाई, आप अपनी तैयारी करो। आप कोई चीज अपने माइंड में नहीं लेना, आप अपनी तैयारी करो, जब फ्री हो ना तब पूछ लेना, हम स्पष्ट आपको बता देंगे कोई भी बात होगी। सीमा जी को और सुबह दोपहर में आराम करना और घूमने। सीमा सिस्टर दोपहर में घूमने जाएंगी, आराम करेंगे। जय भीम नमो बुद्धाय भैया जी। और बताइए भैया जी कैसे हो? मैं भी अपनी तैयारी कर रहा हूँ। अब नहाए वहाए कि मुंह हाथ धो के बदल लिए कपड़ा उपड़ा सोनू भैया?
मुझे बिना तैयारी का कल प्रैक्टिकल करके आया हूँ दीदी। ऐसा काहे करते हो भाई? जब तक मैं कहती हूँ ना, जब तक आपका पेपर, प्रैक्टिकल, स्कूल का कोई, कॉलेज का कोई भी कोई काम हो, आप अपना तैयारी करो, लाइफ का टेंशन ना लिया करो। दूसरे की लाइफ में जाके दूसरे की बातों सुन करके आप परेशान हो जाते हो। अच्छा, बिल्कुल सच्ची भाई। दूसरे की टेंशन अपने माइंड पे लेते हो। मुझे सिखा मैं तो घर पे रहती हूँ ना टेंशन लेके। ये तो मुझे पता है, मैं तो घर पे रहती हूँ ना भाई। मैं टेंशन लेके सो जाऊंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके सर पे तभी बहुत सी ऐसी जिम्मेवारियां हैं। क्या क्या बनाया है सीमा जी आज? जय भीम सीमा सिस्टर, जय भीम। सीमा सिस्टर बता दो क्या क्या बनाया है। मुझे टेंशन की जरूरत नहीं है, यदि देना भी होगा तो पेंशन देना, ताकि मेरा खर्चा पेंशन से ही चल सके। अच्छा भैया, ऐसा कभी दिन ना आए कि आपको पेंशन की आवश्यकता पड़े। बस अपने महापुरुषों से यही कामना करती हूँ, हमारे भाइयों की जिंदगी में ऐसा दिन कभी नहीं आए किसी पेंशन और किसी की हेल्प की जरूरत पड़े। वीर बड़े भैया जी, जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू सो मच। स्वागत है आपका हमारी लाइव में। कैसे हो आप? जय भीम, नमो बुद्धाय सोनू पाजी, जय भीम पाजी, पाजी भैया जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय सीमा सिस्टर। ऐसा दिन आए कि टेंशन से ही काम चले, ऐसा कभी नहीं भाई, कभी नहीं भारती भाई, कभी भी नहीं। हमारे भाइयों टेंशन से मुक्त रहें हमेशा। पाजी भैया जय भीम, कैसे हो? सीमा सिस्टर बोल रही हैं, आप बताओ सीमा सिस्टर, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ, खाना बना रही हूँ। सीमा सिस्टर बोल रही हैं खीरा खा लो। काट दो उसे, सबको दो, थोड़ा सा खा लो। हाथ ना कटे, आराम से। खराब है। रोने वाली आ गई। हाँ भाई, क्लास खत्म हुई है ना, आ गई किचन में। 10 मिनट का रेस्ट मिलता है ना बीच बीच में, एक क्लास के पीछे। थैंक यू सीमा सिस्टर, थैंक यू सो मच। मेरे लिए भी बना लो सीमा सिस्टर। सीमा सिस्टर, वीर भैया जी के लिए भी बना लो। मुझे माँ का बहुत याद आ रहा मैं माँ आज याद आ रहा, आज नहीं आ रहा भाई। स्कूल में जाके बोलती है, स्कूल में जाके बोलती है। अच्छा भैया, ये आईडी है ना कंचन सिस्टर, ये चैनल फॉलो कर लेना। ओके भैया, ओके। ओके वीर भैया जी। ये बात सोचकर हंसी आता है दीदी। अरे भाई, पहले तो जाती थी और मैम को परेशान करती थी। एक जो इसकी क्लास टीचर थी ना, जब ये गई उसका पीछा ही ना छोड़े,
उसका मतलब है, इसका कहने का मतलब था ये मैम कहीं जाए ना, सिर्फ मेरे साथ मुझे ही बैठ के देखे। मैम बहुत परेशान हो जाती थी। फिर मुझे बुलवाई स्कूल में, बोली क्या करूं मैम, श्रेया मुझे बहुत परेशान करती है, दूसरे सेक्शन में नहीं जाने देती है। कंचन सिस्टर ये चैनल फॉलो कर लेना। मैं फॉलो कर लूंगी भैया, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक, बना लेंगे। शाम 4:30 इसी पर का लिव है। ठीक है भैया, थैंक यू मैम, मुझे माँ का बहुत याद आ रहा है। अरे भाई सच्ची, मैम को कहीं आने जाने से इतना ज्यादा वो करती थी ना, बहुत परेशान करती थी। अब तो थोड़ी सी बड़ी हो गई तो अब बोलती है मम्मी की याद आती है। बताओ, फरवरी में 10 साल की हो जाएगी। जय भीम, जय भीम, जय भीम सीमा सिस्टर, जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू सो मच। सीमा सिस्टर आप भी आना शाम, अगर आप फ्री होंगी तो। वीर भैया जी, आप शाम को कहाँ चले गए मेरे लाइव से, बताओ। वीर भैया जी बताओ, देखते हैं कैसी रहती है कले कहाँ। वीर भैया जी मुझे बताओ, आप शाम को कहाँ चले गए लाइव से, जब ऐसी बातें हो रही थी आप क्यों चले गए? आप एक बार तो पूछ लेते बहन ऐसा क्यों, क्या बात चल रहा है? बताओ वीर भैया जी। ओके, थैंक यू भारती भाई, थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय। वीर भैया जी बताओ, आप शाम को क्यों चले गए? मैं पहले अमन सिस्टर से बात होने लगी। अच्छा भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच भारती भाई। हम सोचे कहाँ चले गए वीर भैया जी, एक तो मैं परेशान थी, ऐसी बात चल रही थी, कैसे छोड़ के चले गए, मुझे बहुत अजीब सा लगा। फिर साधना सिस्टर की लाइफ पे चला गया। ओके भैया, कोई बात नहीं है वीर भैया जी। थैंक यू सीमा सिस्टर, थैंक यू सो मच। मुझे अमन सिस्टर का क्लिप के लिए मैसेज आ रहा था। ओके भैया, थैंक यू सीमा सिस्टर, थैंक यू। टाइम सेट करना था। हम भी तो परेशान थे भैया। तो दोनों से बात करते करते भूल गया। ओके दीदी, रोटी बना लूं उसके बाद आऊंगी। ओके सीमा सिस्टर, थैंक यू, बना लो बहन। मैं भी तो परेशान थी भैया, इसीलिए मुझे थोड़ा सा अजीब फील हुआ, जरूर सच्ची बता रही दिल से। चलो भैया आए भी इस टाइम में, ऐसे चले गए। कम से कम 5 मिनट तो साथ दिए होते मेरा। वहां एक मनवादी से लड़ाई चल रही थी, मेरे में भी तो मनवादी लोग थे। इसलिए सिस्टर नहीं आ पाया, कोई बात नहीं है भैया।
थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू। मुझे लगा कोई आपका अपना है। ऐसा कुछ नहीं है वीर भैया जी, मेरा अपना कौन है? कोई नहीं है। अपना तो ही देखते हैं ना कि हमारे साथ मुसीबत में कौन खड़ा है। मुझे थोड़ा भी आइडिया नहीं था। अपना वो नहीं होता है जो बुरे समय में छोड़कर चला जाए, अपना वो होता है सुख के टाइम में बेशक वो ना रहे, लेकिन दुख के टाइम में जो साथ देता है वही अपना होता है, वरना मैं जाता ही नहीं। कोई बात नहीं है वीर भैया जी, उसकी बात नहीं है, बट वो मेरा कोई अपना नहीं था। मुझे लगा नॉर्मल बात चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं थी भैया। खाना पीना हो गया आपका? खाना हो गया वीर भैया जी आपका? आपको मेरा पता तो है, मैं इस तरह जाता नहीं। मुझे पता भैया, सच में मुझे ये थोड़ा सा अफसोस ये हुआ, सच्ची मैं बताऊं, मुझे ना, मैं कल लाइव भी एंड कर दी। मैंने कहा वीर भैया जी आए भी ऐसे हाल में, मतलब वो तुरंत चले गए। मैं भी तो एक बहन ही थी, जैसे सबका सपोर्ट करते कोई बात नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई बहनें अगर मुसीबत में कहीं हैं तो 2-4 मिनट तो भाई लोग टाइम दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए मुझे थोड़ा सा अजीब सा फील हुआ था, तब मैं वो चीज मैं आपके सामने भी रख दी। मैं वो चीज मन को नहीं रखती, बोल देती हूँ। लो जी सुन लो। ऐसी कोई मैं पहले कभी नहीं रुकता, नहीं क्या नहीं रुकते हो भैया, ऐसी बात नहीं है, आप तो रुकते हो, ऐसी बात नहीं है वीर भैया जी। लेकिन मैं कल ना सच में बहुत परेशान हो गई थी, मैं वो रो भी दी थी लाइफ पे। एक उम्मीद होती है भारतीय, तो सॉरी वीर भैया जी, कि नहीं हम जिसको समझते नहीं ये हमारे लोग हैं, तो एक अपनापन एहसास होता है कि नहीं ये लोग हमारे हैं, जिनको हम जानते नहीं ये सब हमारे हैं, तो एक अपना फैमिली की तरह अपनापन होता है और समझते भी हैं। आपको मेरा पता तो है, यमन सिस्टर से बात हो रही थी, कोलेब की बात चल रही थी, पता है भैया। आपको पता तो सारा अरेंज मुझे करना होता है, लिंक लेना, टाइमिंग सब। ओके भैया थैंक यू, मुझे पता है।
वरना मुझे बोलोगे। नहीं नहीं भैया, बोलेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है वीर भैया जी। हम मुझे वैसे पता ही नहीं चला कि कोई बात चल रही है सिस्टर। अच्छा भैया, क्योंकि आप रुके नहीं ना 1 मिनट भी। 1-2 कमेंट किए फिर चले गए। आप रुके होते 2-4 मिनट ना, तब आपको शायद पता चला होता। मुझे लगा सोनू पाजी हैं, शवि हैं। हाँ, सोनू भैया नहीं थे, लास्ट में आए। कोई बात नहीं है वीर भैया जी, इतना तो होता रहता। आपके लाइव पर आया तभी कॉल आ गया। अच्छा भैया, कोई बात नहीं वीर भैया जी, मुझे कैसे पता चलता। हाँ सही बात है, आपकी भी बात तो राइट है। थैंक यू भैया, कोई बात नहीं वीर भैया जी। खाना हुआ आपका, ये पूछ रही हूँ। रवि भैया कहाँ बिजी चल रहे हैं इस टाइम वीर भैया जी? फिर साधना सिस्टर की लाइव पर मनवादी से युद्ध हो रहा था। हाँ भैया, उनके लाइव में तो ज्यादा आते, मेरे लाइव में कोई नहीं आता था। पर जिस दिन मैं सिस्टर के साथ ना लाइव करी थी ज्वाइन ना, तो उस दिन से मेरे में भी 1-2 लोग आ रहे हैं। पर उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत तो अपनों से होती है जो अपने होते हैं। मनवादियों से कोई दिक्कत नहीं होती। आपको पता है ना, उनकी एक बात बर्दाश्त नहीं करती हूँ मैं, पलट के जवाब देके तब उनको हाइड करती हूँ। तो रुकना पड़ा। बिल्कुल भैया, ऐसी जगह रुकना चाहिए। रवि पाजी का एग्जाम था। अच्छा भैया, तभी तो नहीं दिख रहे हैं दीदी के लाइव में ना, कहीं भी नहीं दिख रहे हैं भैया। किस चीज का एग्जाम है रवि भैया का? तो थोड़े बिजी चल रहे हैं। कोई बात नहीं भैया, बिल्कुल एग्जाम अच्छे से करें अपना। किस चीज का भैया, कौन सा कोर्स कर रहे हैं रवि भैया? गवर्नमेंट जॉब का। अच्छा भैया, शायद। ओके भैया, थैंक यू। अच्छी बात है। बात तो चलो उनकी सिस्टर से होती रहती है फोन पे।
हाँ भैया, ये तो मुझे पता है कि दीदी से और भैया की बात होती है। थैंक यू सोनू भैया। नहा वहा लिए कि नहीं अभी? सोनू भैया नहाए कि नहीं अभी? नहीं, कोई बात नहीं है, कोई देख नहीं रहा है। मुंह धो लो, कपड़े चेंज कर लो, बाल और भिगो के थोड़ा सा जेल वेल लगा लो। इतना थोड़ी कोई देख रहा है नहाए हो कि नहीं। सही कहा वीर भैया जी कि नहीं? भैया हंस रहे हैं। और क्या भैया, थोड़ा सा परफ्यूम मार लेना। पाजी आप तो बहुत बिजी हो। सिर्फ बाल धो लीजिए सोनू भैया। अरे नहीं भारती भाई, बाल धोएंगे तो ठंडा लग जाएगा, जेल लगा लेंगे, परफ्यूम थोड़ा सा मार लेंगे, खुद ही खुशबू आने लग जाएगी। जय भीम भारती भाई, जय भीम, नमो बुद्धाय। सोनू पाजी मेरे को भी पेंशन आए हुए हैं। अच्छा भैया, किस चीज का? मैं यहीं पर हूँ दीदी। कब जाओगे? यहीं पर हो? आप भी तैयार हो जाओ, नहीं तो सोनू भैया वाला आपको भी अपनाना पड़ेगा। मैं सिर्फ देख रहा हूँ लाइव दीदी। रोज किसी ना किसी पार्टी पर जाना पड़ रहा है। अच्छा, वेज वाले पे तो नहीं जाते होंगे भैया, मुझे पता है। नॉन वेज जहां से आता होगा वहीं आप जाते भी होंगे। 11 बजे? 11 बजे तो 10 तो बज गए भारती भाई। 1 घंटा तो अपने लिए टाइम दे दो अब। मेरे पास ना जेल है ना परफ्यूम है, सब पर जाता हूँ सिस्टर। अच्छा, बेज अच्छी लगती है भैया आपको? मुझे तो नहीं लग रहा है। फिर कहाँ से हम लोग याद रहेंगे, पार्टी का मजा ले रहे हो। मुझे नहीं नहाने से मतलब रहता है दीदी, मैं तो 15 दिन में एक बार नहा बहता हूँ कि नहाता हूँ। 15 दिन में एक बार नहाते हो भाई? नहाता हूँ हाँ। इतना जल्दी नहीं करते हो? सोनू पाजी लोहड़ी तक यही हाल रहेगा सोनू पाजी। अच्छा, रोज पार्टी ही रहेगी भैया की। कभी आप अपने घर रख लो ना, हम लोगों को पार्टी दे दो वीर भैया जी। हम लोगों को तो कहीं पार्टी मिलती नहीं है। एक दिन आप ही पार्टी दे दो, फिर तो आपके मौज ही मौज हैं। ये भी मेरे लिए कम ही दीदी। वही तो कह रही हूँ भाई, बहुत जल्दी जल्दी नहीं नहा लेते हो भारती भाई। इतना जल्दी सर्दी में कौन नहाता है भारती भाई, बताओ। सर्दी में इतना जल्दी कौन नहाता है? कभी कभी पूरा महीना ही नहीं नहाता हूँ। फिर भी तो कम है भाई। सर्दी में लोग तो 6 महीने नहीं नहाते हैं, आप तो महीने में 15 दिन में नहा भी लेते हो। हम तो 6 महीने पूरे ऐश करते हैं, उसके बाद ही नहाते हैं जब गर्मी आ जाती है। मौज किस तरह की, यहाँ जाते हैं कम से कम 500 तो डाल।
सही बात बोल रहे हो वीर भैया जी, जहाँ जाओ सच्ची ये तो बात राइट है, कम से कम 500 रुपया तो देना ही देना है। आपकी बात बिल्कुल राइट वीर भैया जी, बिल्कुल राइट है। एक दिन हम लोगों को भी पार्टी कर दो भैया, हम लोगों के लिए भी। कब कर रहे हो वीर भैया जी? सिस्टर कहीं तो 11 भी कम लगता है। बिल्कुल भैया बिल्कुल सही बात है, 1100 रुपये, 1100 भी कम। बिल्कुल भैया बिल्कुल सही कह रहे हो आप, राइट कह रहे हो, क्योंकि हम लोग देते पता है ना। आपको और कोई नहीं मिला था दीदी जो मुझे बेइज्जती कर रही हैं? भारती भाई बताओ, मैं आपकी बेइज्जती कर रही हूँ? मैं बेइज्जती कर रही हूँ भारती भाई बताओ? यहाँ तो नहाने की बात होती है, सर्दी में मैं तो ब्रश भी नहीं करती हूँ, आपको पता है? सोचती हूँ हाथ पैर कौन गीला करेगा, ऊपर से क्रीम लगा लेती हूँ, कपड़े चेंज किया, परफ्यूम मार लेती हूँ, निकलो बाहर। हंस क्यों रहे हो भारती भाई? मैं तो भूल ही गया था, मेरा तो तरफ हो रहा था। अच्छा, तारीफ, हाँ। आपकी तारीफ कर रहे थे, आप समझे नहीं। थैंक यू वीर भैया जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे सिखा रही हो? नहीं भाई सिखा तो नहीं रही हूँ। जिसे बन सकते हैं बिल्कुल। क्लास खत्म हो गए? हमें 10-11 पे क्लास खत्म करते, फिर 9 मिनट में चैलेंज की क्लास है। सारी क्लास अटेंड करो। ये डायलॉग सुना है दीदी? कौन सा डायलॉग भैया बताओ? भारती भाई बताओ डायलॉग कौन सा है? श्रेया खाना खा लो, जब तक क्लास नहीं अटेंड करना है तब तक खा लो, जब दूसरी क्लास चालू जाएगी अभी 10 मिनट बाद। अच्छा मुझे सिखा रही हो ये डायलॉग? नहीं भाई मुझे आता ही नहीं। सब्जी रोटी खा लो, फिर अभी बनाते हैं दाल चावल। सब्जी रोटी फिर क्या खाना है? खाना खा लो भारती भाई, नाश्ता ही कर लो। थैंक यू सो मच। आज देखते हैं कलेव कैसा रहता है। ओके भैया। पुराना वाला फोन आपने ले लिया? नहीं बेटा मैंने नहीं लिया, जहाँ रखा होगा वहीं होगा। नहीं मम्मी ने नहीं लिया, क्योंकि अमन सिस्टर
अगर आती तो कोई दिक्कत नहीं होती सिस्टर को। अच्छा भैया, उनकी लैंग्वेज पंजाबी है क्या? बताना वीर भैया जी। थैंक यू भारती भाई, थैंक यू। वीर भैया जो उनकी लैंग्वेज पंजाबी है। क्योंकि अमन सिस्टर ने कॉलेज का इनवाइट किया है तो सिस्टर को पंजाबी पढ़ने भी आएगी। साधना दीदी को हाँ में हाँ मिला देंगे हम लोग। मोस्टली पंजाबी है। अच्छा भैया, थैंक यू भारती भाई, थैंक यू। सत्य की खोज, थैंक यू भैया, थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा ही आईडी है दीदी, मुझे पता मेरे भाई। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम बड़े भैया जी, स्वागत है आपका, कैसे हो? भैया फिर से बोल दिया, सॉरी भाई, मुंह से आ जाता है। सोनू भैया को भैया बोलती हूँ, सबको भैया बोलती तो आ जाता है, सॉरी। सॉरी भाई, सॉरी। मैं आपका फैन हूँ। अच्छी बात है भैया, रहना चाहिए। मुंबई से हूँ। ओके, थैंक यू। आप तो मेरे लाइव में इससे पहले भी आ चुके हो, मैं पहचान भी रही हूँ आपको। हाँ भैया, मैं पहचान रही हूँ आपको। यहाँ सब पंजाबी लिखेंगे, हम कैसे समझेंगे वीर भैया जी, बताओ फिर। आप ही बताओगे सारे कमेंट को हिंदी करके। हाँ, तभी आपको हंसी आ रही है भैया। आप और हम एक हैं, समझे नहीं? जरा बताना, हम आपकी बात को समझे नहीं। दोबारा बताना क्या बोलना चाह रही हूँ। बाबा जो बोलना लिमिट में। जय भीम। अच्छा, ऐसे ही बोलो, बात को घुमा क्यों रहे हो? बात को घुमा क्यों रहे हो? ऐसे बोलो फिर सीधे। वीर भैया जी, रोटी सब्जी खा लो। अच्छा, मुझे पता है
आप अच्छे विचार रखो। अच्छा, आपको अच्छा नहीं रखना है ना तो आपके लिए लाइफ भी नहीं है। यहाँ गंदे लोगों के लिए लाइफ नहीं होती है भैया। मैंने क्या गलत बोला? आपने गलत नहीं बोला, जिसको भैया ने हाइड किया है। डेढ़ बजे खाना खा लो, सब्जी रोटी। ओके, नहीं आएंगे। सॉरी, कोई बात नहीं है भैया। सॉरी क्यों बोल रहे हो? नहीं आना, मत आना। मैं खा चुका हूँ सिस्टर। ओके भैया, थैंक यू। अरे चिड़िया, मुर्गी, ये मुर्गी, मुर्गी, मुर्गी कहाँ है? मुर्गी? हाँ, आवाज नहीं, काट के आई? आवाज नहीं हो। हाँ, अच्छा रुक जा। थैंक यू सो मच। क्या जी? कहाँ जा रहे होगा सब? आज सिस्टर देखते हैं, साधना सिस्टर पंजाबी कैसी बोलती हैं। अच्छा। पंजाबी। पंजाबी भाषा है ना भैया।
बीत भैया चले गए क्या आप? मैं थोड़ी सी बिजी हो गई थी, कोई बात हो गई थी भैया, क्या करूं। आज सिस्टर देखते हैं सिस्टर पंजाबी कैसी बोलती हैं, या उनकी लाइव पर चुपचाप बैठती हैं पर उनको हिंदी पंजाबी इंग्लिश बोलना आता है। अच्छा भैया, कोई बात नहीं है, फिर हम लोग करेंगे कमेंट। अमन सिस्टर की इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं। 23 नंबर लाइक कर दिया सिस्टर। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। फूल कुमारी सिस्टर, स्वागत है आपका हमारी लाइव में, थैंक यू सो मच। बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। जय 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 भीम सिस्टर, जय भीम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू बहन, थैंक यू। थैंक यू सो मच सिस्टर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फूल कुमारी सिस्टर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सिस्टर फूल कुमारी सिस्टर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सोनू भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
जय भीम, नमो बुद्धा। सनोज भाई जय भीम। खाना पीना हो गया दीदी जी? खाना नहीं हुआ भाई, खाना क्या बताएं आप। नहीं सोनू भैया, अभी खाना नहीं खाई हूँ, अभी तो चाय पिया था थोड़ी देर पहले। और बताइए बहन जी कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सनोज भाई, मैं बढ़िया हूँ। आप बताओ आप कैसे हो? थैंक यू सनोज भैया, थैंक यू सो मच। आपका खाना पीना हुआ? आपका खाना पीना हुआ सनोज भैया? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी है हुआ दीदी जी। अच्छा, अभी आपका खाना हुआ है? ओके भाई। ओके भाई, बाय बाय। जाओ सनोज भाई नहा लो।
ठीक है, you have to check it yourself first. I'm going to check it, but you will mistakes that you have done, है ना? अगर आप कुछ check करोगे, so you will know कि आपने कहाँ गलती करी है. Otherwise, if I will check, you people do not even bother to open your notebook. आपको पता ही नहीं होगा कि आपने गलती करी है. You just close your notebook like this and keep it like that only. So you will check it yourself first. Check your answers from the answer key. We have already done this in the class. National flower, national animal, national vegetable, national fruit, national anthem, national song, national flag.